Next topic is your dual nature of light. Okay, now what is dual nature of light? Okay, suppose I am going to explain it with the help of something not related to the waves. Okay, with a different thing. Okay, suppose I have this slope here like this. Okay, and let's say I have this one ball here. अभी अगर I throw this ball from here, तो ये continuous manner में it will come to this position, yes or no? है ना? अभी if मैं जो slope है वो थोड़ा different ले लूँ like this I have, and abhi if I have a ball here, this ball is not going to come directly. Okay, it is a discontinuous. First it will fall here, then it will fall here, then it will fall here, here, and here, and then I will ultimately get my ball at this particular position. So this is your continuous. Let's say the height of this is 10 meter. So all your 0 to 10 where it is coming, it is all continuous in nature. Here let's say you have this value 0, 1, 2, 3, 4. Okay, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So if you are throwing a ball here, this is not continuous. 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7, this is not coming out to be continuous. So this type of nature, when it is continuous in nature, it is called as wave nature. Okay, and when it is coming down at like this, which is discontinuous in nature, then this property is called as particle nature. Got it? So I will have here 10 values, like 10 say it will come to 8, 8 say it will come to 6, 6 say it will come to 4, and like so on. And here 0 to 10, all values are continuous. And in this, these are discontinuous value. So from here we can define wave. What is a wave? It is the mode of transfer of energy without the transference of matter. Okay, so write down this. Okay, so let's see a little video, okay, where they're explaining about this wave nature and particle nature. Okay, just give me 1 second. You look down and see a yellow pencil lying on your desk. Your eyes, and then your brain, are collecting all sorts of information about the pencil: its size,
color, shape, distance, and more. But how exactly does this happen? The ancient Greeks were the first to think more or less scientifically about what light is and how vision works. Some Greek philosophers, including Plato and Pythagoras, thought that light originated in our eyes and that vision happened when little invisible probes were sent to gather information about faraway objects. It took over 1,000 years before the Arab scientist Al-Hasan figured out that the old Greek theory of light couldn't be right. In Al-Hasan's picture, your eyes don't send out invisible intelligence gathering probes. They simply collect the light. Okay, volume is okay, no? Let me know. Volume समझ में आ रहा है ना? Okay, and otherwise subtitles are also there. Okay. That falls into them. Al-Hasan's theory accounts for a fact that the Greeks couldn't easily explain: why it gets dark sometimes. The idea is that very few objects actually emit their own light. The special light-emitting objects, like the sun or a light bulb, are known as sources of light. Most of the things we see, like that pencil on your desk, are simply reflecting light from a source, rather than producing their own. So, when you look at your pencil, the light that hits your eye actually originated at the sun and has traveled millions of miles across empty space before bouncing off the pencil and into your eye. Which is pretty cool when you think about it. But what exactly is the stuff that's emitted from the sun, and how do we see it? Is it a particle, like atoms? Or is it a wave, like ripples on the surface of a pond? Scientists in the modern era would spend a couple of 100 years figuring out the answer to this question. Isaac Newton was one of the earliest. Newton believed that light is made up of tiny, atom-like particles which he called corpuscles. Using this assumption, he was able to explain some properties of light. For example, refraction, which is how a beam of light appears to bend as it passes from air into water. But in science, even geniuses sometimes get things wrong. In the 19th century, long after Newton died, scientists did a series of experiments that clearly showed that light can't be made up of tiny atom-like particles. For one thing, two beams of light that cross paths don't interact with each other at all. If light were made of tiny solid balls, then you would expect that some of the particles from beam A would crash into some of the particles from beam B. If that happened, the two particles involved in the collision would bounce off in random directions. But that doesn't happen. The beams of light pass right through each other, as you can check for yourself with two laser pointers and some chalk dust. For another thing, light makes interference patterns. Interference patterns are the complicated undulations that happen when two wave patterns occupy the same space. They can be seen when two objects disturb the surface of a still pond, and also when two point-like sources of light are placed near each other. Only waves make interference patterns, particles don't. And, as a bonus, understanding that light acts like a wave leads naturally to an explanation of what color is, and why that pencil looks yellow. So, it's settled then. Light is a wave, right? Not so fast. In the 20th century, scientists did experiments that appeared to show light acting like a particle. For instance, when you shine light on a metal, the light transfers its energy to the atoms in the metal in discrete packets, called quanta. But we can't just forget about properties like interference either. So these quanta of light aren't at all like the tiny hard spheres Newton imagined. This results that light sometimes behaves like a particle and sometimes behaves like a wave, led to a revolutionary new physics theory called quantum mechanics. So, after all that, let's go back to the question, what is light? Well, light isn't really like anything we're used to dealing with in our everyday lives. Sometimes it behaves like a particle, and other times it behaves like a wave, but it isn't exactly like either. Okay, so I hope you people got some little bit of idea. So I'm this is what your dual nature of light. Okay, that means there are some experiments which suggest diffraction experiment. You will study this in physics. So there are some experiments which tells us about that light is a particle. Okay, it has a very small tiny particles, and there are few experiments which confer that light is kind of a wave. Okay, so ultimately we concluded that light sometimes show wave nature and sometimes show particle nature. So they have a dual nature, or you can say that dual characteristics. Is that okay to everyone? Understood?
So waves are basically two types. We will talk about particle nature also alag se, and we will be talking about wave nature also. So waves are of two types. Okay, first one is your transverse wave, and second one is your longitudinal waves. Okay, so these different types of waves you can find. अभी ये सब चीज़ें जो हैं they you will study in physics in more details. ठीक है, केमिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं है. तो दो टाइप के वेव्स मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ इस तरीके से, तो एक वेव आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और जो हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं वो इस तरीके से होगा. ओके, तो दोनों अलग अलग वेव्स है, बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बोथ दीज वेव्स. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे शेडेड कर देती हूँ सो दैट यू कैन differentiate. So one of them is longitudinal and one of them is transverse. Okay, both are perpendicular to each other. I hope थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा. Okay. ओके, सो ये सब डिटेल में यू विल बी टॉकिंग अबाउट इन फिजिक्स. हमको यहाँ पे बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ कुछ बात करनी है, एंड वो है, लिख लो यहाँ पे, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वेव में कुछ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स टाइप की चीज़ें होती हैं. सो लेट्स से इस तरीके का हम एक ही वेव, दोनों को साथ में ज़रूरी नहीं है हम कंसिडर करें, कोई भी एक ले लो, बात बराबर ही है, दोनों सेम टाइप के हैं, बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. अगर मैंने ये वेव लिया इस टॉप से इस टॉप तक, व्हेन आई एम गोइंग, देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट. ओके, जो ऊपर होता है उधर से हम क्या बोलते हैं उसको, क्रेस्ट. ये जो डाउनवर्ड थिंग है, ओके, दैट इज नोन एज ट्रफ. So this is your crest, this is your crest, this is your crest, this is your trough, this is your trough. Okay, इन दोनों का जो भी डिस्टेंस आएगा बिटवीन दिस, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ओके, एंड दिस डिस्टेंस, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इतना, दिस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज वेवलेंथ. अंडरस्टूड? Any doubt here? Just simple definitions which will come in your exam. Okay, तो अभी हम इन सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे. First is your wavelength. Wavelength is represented as lambda, and definition is, it is the distance between two consecutive troughs and crest. Okay, ऑफ कोर्स क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है, या तो टू क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, या फिर दो ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को भी आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हो. बोथ आर सेम. यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, या फिर नैनोमीटर भी हो सकता है. अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था इन सारी यूनिट्स को हमको किस तरीके से चेंज करना है एक दूसरे में. ओके, सेकेंड डेफिनेशन इज योर वेव नंबर. Wave number is represented as nu and that sign, and it is reciprocal of lambda. Wavelength के reciprocal को we call it as wave number, and defined as number of waves per unit length.
ओके, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर. अभी रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, तो दिस विल बी योर फॉर्मूला. यूनिट की अगर आप बात करोगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर एंगस्ट्रॉम इनवर्स, या फिर नैनो इनवर्स. जो भी आपके पास वेवलेंथ का यूनिट है उसका इनवर्स हो जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज फ्रीक्वेंसी. Frequency is represented as only nu. This is known as nu. And the definition is number of waves passing through a particular point in 1 second. एक सेकेंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. यूनिट होता है इसका हर्ट्स, है ना. आपको पता है जो वॉइस आप हियर करते हो वो हर्ट्स में होता है साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो हर्ट्स में हम मेजर करते हैं. या फिर आप लिख सकते हो साइकिल पर सेकेंड, मतलब ये वाला जो साइकिल है वो कितने, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कवर कर रहा है, इतना. दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. देन वी हैव एम्पलीट्यूड. Amplitude, that is, it is represented as A. This is height or the height of crest and trough. Height of crest and trough is known as amplitude. Of course इसका यूनिट क्योंकि डिस्टेंस ही है, तो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, या फिर नैनोमीटर में. मोस्टली यही तीनों टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से. एंड वेलोसिटीज सबको आपने पढ़ रखा है बचपन में ही फिजिक्स में. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम. जो भी आपका टाइम है, सेकेंड ले लो या मिनट ले लो, तो कितना पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज योर वेलोसिटी. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा wavelength, sorry, frequency and velocity. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखना है. फॉर्मूला बहुत बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. लिख लो यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. राइट डाउन दिस. Okay, so now next topic is electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations या फिर electromagnetic waves, all are same thing. Electromagnetic radiations. Okay, so here we will be talking about the those waves which are having electrical as well as magnetic field. Okay, so पहले definition लिख लो फिर explain करती हूँ. Waves in which electrical and magnetic field is present are known as electromagnetic waves, EM waves.
Okay, short form में we call it as EM waves. Next, write down electromagnetic waves. No, 1 second. One second, everyone. Next is electrical and magnetic field are perpendicular to each other. ठीक है, ये साइन होता है perpendicular का. Write it like this: perpendicular to each other, as well as they are perpendicular to the direction of propagation of wave. Next point, EM waves always travel with the speed of light, and they do not require any medium for propagation. Okay, what does this all mean? So this means that if you put an light or an wave to which you want to study, and let's say this is your wave, say propagation means movement. Okay, this is your direction of wave, x-axis. Okay, so if you put the electrical field or magnetic field, both will be perpendicular to each other. Okay, so let's say this y-axis is your electrical field and this z-axis is your मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बी से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही होगा कितना वैल्यू होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अगर आपके पास वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर. तो वेव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से ट्रैवल करती है, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, let's see one little video. In the modern is traveling electromagnetic. Humans are completely surrounded by electromagnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist, Heinrich Hertz, was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. This was a clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation by formulating 4 mathematical equations. However, these equations and the Hertz experiment raised a question: how do electromagnetic fields detach themselves from wires and propagate through a space? More specifically, what we need is a traveling electromagnetic wave and not a fluctuating one. Let's explore this logically. Consider an electric charge, which is moving at a constant speed. The electric field around it is shown. Now, imagine for a fraction of a second, it accelerates. After that,
it continues its uniform motion at a higher speed. What we need to understand is the effect of this acceleration on the electric field. The interesting thing is that the information does not travel at an infinite speed. Instead, it travels at the speed of light. Similarly, the information about the sudden variation of velocity of the charge does not get conveyed to the whole electric field region. The field near it knows about it, but the field far away still has no idea that the charge has accelerated and it is still in the old state. Let's separate out these regions with the help of two circles. Since the electric field cannot break, the field between these distances must transition. This transition field is known as a kink. The kink moves or radiates outwards at the speed of light. To show the kink animation in a clear way, let's move the camera along with the charge. We can say here that the acceleration of the charge has caused an electromagnetic disturbance or electromagnetic radiation. Based on this understanding, we will be able to understand the most important experiment in the field of antenna technology, the oscillating electric dipole. The interesting fact about this simple oscillating dipole is that it produces electromagnetic radiation in a perfectly sinusoidal manner. Let's see how it is achieved. Before getting into the electromagnetics, let's understand how velocity and acceleration vary in this simple case. It is clear that at both ends the velocities should be zero, and in the middle the velocity should be at the maximum. This means that this is a case of continuous acceleration and deceleration. The electric field pattern is drawn here when the charges are far apart and when the velocity is zero. In order to have a better understanding, let's examine one of the electric field lines. Let's observe the electric field line at t by 8. You can see that the electric field line is deformed. The reason for this deformation is simple. This time period is the region with the highest acceleration. As we saw earlier, accelerating or decelerating charges cause kinks in the electric field. In short, the old electric field does not get adjusted to the new field very well. This deformation is continuous, since there is continuous acceleration in the charge. When two charges meet at the central point, the deformed line also meets there. After that, it detaches and radiates. This radiation travels at the speed of light. If you plot an electric field intensity variation with respect to length, you can see that the radiation we have produced is perfectly sinusoidal in nature. Please note that this varying electric field will automatically generate a varying magnetic field perpendicular to it. Now, let's have a look at how this applies to an antenna. A time-varying voltage is applied to the metal wire as shown. Due to the effect of the voltage, the electrons will be displaced from right to left and create positive and negative charges. With a continuous variation of voltage, the positive and negative charges will shuttle back and forth in the wire. This simple arrangement is known as a dipole antenna. The dipole antenna produces the same radiation as we saw in the previous section. In this case, the antenna works as a transmitter. The frequency of the transmitted signal will be the same as the frequency of the applied voltage signal. The same antenna can act as a receiver if the operation of the antenna is reversed. When propagating electromagnetic waves strike the antenna, the oscillating fields of waves create positive and negative charges at the ends of the antenna. The varying charge accumulation means the varying voltage signal is produced at the center of the antenna. This voltage signal is the output when the antenna works as a receiver. We can note here that for perfect transmission or reception, the length of the antenna should be half of the wavelength. This is the first antenna design criterion for proper reception or transmission. The second most important design criterion is a term called impedance matching. Perfect impedance matching will make sure that the waves are radiated in the most efficient way. When an alternating current passes through a circuit, it faces opposition from the combined effects of resistance, inductance, and capacitance. This combined effect is known as impedance. According to the maximum power transfer theorem, to transfer the maximum amount of power, the load impedance should match with the source impedance. For further understanding, let's take an example of a circuit containing an alternator as a source and a motor, bulb, etc. as a load. In this setup, to achieve maximum power transfer from alternator to the load, the impedance of the load must match with the impedance of the alternator.
A similar impedance balance is required in the case of an antenna system. Since an antenna works on high frequency signals, the impedance of the transmission lines also becomes important. Hence, to achieve maximum power, the impedance of an antenna should match to the impedance of the source and transmission line as well. If the impedances do not match, some portion of the power would be reflected back to the source instead of radiating outwards from the antenna. A free space has an impedance value of 377 ohms. In a parabolic antenna, a waveguide is used as a transmission line, which has a different impedance value from the free space. That's why. Okay, so the all these things are not that required. I just wanted to give you the idea of electromagnetic waves, that we are surrounded by these waves totally. All our devices, your sun radiations and everything is your electromagnetic waves. Okay, that's what I wanted to tell you. And there are different types of electromagnetic waves, not that one wave, different types of magnetic waves. So previously we studied a formula where velocity was equal to frequency into wavelength, but in the case of electromagnetic waves, velocity is like the velocity of light is actually the c, that is 3, that is a constant value, 3 into 10 is power 8 meter per second. So this v will be replaced by c, and this formula will become like this. Got it? Now, when what are the different kinds of electromagnetic waves? So these are your increasing order of wavelength of electromagnetic waves. Okay, so first there are cosmic rays. You might have heard about this in some news and everything. Okay, then there is gamma rays, then x rays, then we have uv rays, then visible rays, then we have IR. IR means infrared rays. Then we have microwave waves, and then radio waves. We as a human beings, apart from this visible waves, we cannot see any other kind of waves. Like we cannot observe cosmic rays, we cannot observe gamma, x rays. आप एक्सरे कराने जाते हो अगर हॉस्पिटल में, तो आपको रेज दिखाई देते हैं क्या जब आपका एक्सरे होता है? बिकॉज आर आईज आर नॉट meant to see these kind of rays, we cannot see them. We can only see the visible range, and this visible range is your vibgyor. Okay, vibgyor means you might have studied this rainbow colors, no? So V is your violet, then I is your indigo, B is blue, then G is green, Y is yellow, O is orange. These are R is red. So here the value of lambda is 3800 angstrom, and for here the value of lambda is 7600 angstrom. So any wave which is coming in this range from 3800 angstrom to 7600 angstrom, we can observe it. Okay, rest when we are moving from left to right here, in this particular case, your wavelength is increasing, and from here you can see that this wavelength and lambda, these are inversely proportional to each other. Okay, that means if I want to write nu, I can write it c by lambda. Okay, so there is an inverse relation between frequency and wavelength. So if wavelength is increasing, that means frequency will be decreasing. Got it? Clear hai everyone? Let me know. So we are all surrounded with these kind of waves which is present around us. Okay, there are few insects which can see this IR radiations or UV radiations. Okay, but we cannot see. We know that UV radiations are very harmful for our skin because they might cause some mutation, and we can suffer from skin cancer. So we cannot see them, but that does not mean that they don't exist. Our visible range is from
3800 angstrom to 7600 angstrom. Okay, let's do few numericals on this topic. First question is, if wavelength of a particular wave is 5000 angstrom, then calculate its frequency. Okay, this is your first question. Second question, if wavelength of visible light is very strong, that is from 4000 to 8000 angstrom, then calculate range of frequency of visible length, visible light कर दो. Do this question. दोनों question करो. I'm giving you 2 minutes. Then I will, if you are not able to solve it, then I will do it. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा करा देती हूँ. ओके, सो वेवलेंथ आपको गिवन है. ओके, और आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. तो आपने अभी तक एक ही रिलेशन पढ़ा है, दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. सी का वैल्यू तो फिक्स है 3 इंटू 10⁻8. ये आपको गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. वेरी सिंपल. तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा. सी कितना है आपके पास, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. और आपको जो वेवलेंथ गिवन है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है. एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो आपको, आप चैप्टर के स्टार्टिंग में देखना, मैंने आपको बताया था दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम. सॉरी उल्टा लिख दिया. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. सो 5000 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 मीटर से. ये और ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे 10⁻8 है और ये ऊपर चले जाएगा. इसको सॉल्व करो आप, ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. एंड सेकेंड इनवर्स को ही हम बोल सकते हैं हर्ट्ज. तो कंफ्यूज नहीं होना है. हो सकता है यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख दे 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. ठीक है, आपको बस सॉल्व करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है. सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है दैट द वेवलेंथ, इफ वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और उसका रेंज कितना है 4000 से 8000 का, देन आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज फाइंड आउट करना है. बस वेरी इजी. लैम्डा यहाँ पे कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम. आपको पता है सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सी बाई लैम्डा. यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा. इसके लिए आपके पास रेंज कितना गिवन है 8000 एंगस्ट्रॉम. बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 10⁻10 मीटर. For this side, frequency is equal to 3 into 10⁻8 meter per second
divided by 8000 into 10 raised to the power minus 10 मीटर. अब बस आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4 डिवाइड कर दो तो यू विल हैव 7.5. इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 10 raised to the power 14 second inverse. And this frequency will be 3.75 into 10 raised to the power 14 second inverse. तो आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज फॉर्म करना था. फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा फ्रॉम दिस टू दिस. गॉट इट? संपदा, आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, एक बार चेक करना. चलो, राइट डाउन दिस फिर से. फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था वेव नेचर से. दिस इज योर पार्टिकल नेचर. तो ऐसा कुछ लिखने का जस्ट है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ ही गया है, बस थोड़ा सा चीज़ें लिख लो. देयर आर certain phenomenon such as inference, diffraction, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, which can be explained on the basis of wave nature of light. But there are certain phenomenon like photoelectric effect, black body radiation, etc., which can only be explained on the basis of particle nature of light. Okay, so there are few experiments which suggest that light is a wave, and there are few experiments which suggest that light is a particle. So ये दोनों जो phenomenon है, that is your black body radiation and photoelectric effect, ये दोनों हम पढ़ेंगे इसी chapter में. But जो wave nature है, that you will study in your physics. Okay, so इतना लिख लोगे, इतना understand कर लोगे, that is more than enough for here. Next topic is your Planck's quantum theory. ओके, अभी प्लैंक ने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया कि जो भी रेडिएशंस जो है एक ब्लैक बॉडी रेडिएट करता है. ओके, उनको स्टडी करके उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज बनाई, दैट इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, बट उससे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक चीज़ हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, सो इन दिस राइट डाउन. Okay, so you know that all the objects, they do emit electromagnetic radiations. Okay, and
such as your radio waves, microwaves, okay, and which are not in your visible range. So black body radiation is basically a term which is used to describe a relationship between an object's temperature and the wavelength of electromagnetic radiation it emits. मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी जो रेडिएशंस एमिट कर रही है, आप भी रेडिएशंस एमिट करते हो, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करती है, तो किस वेवलेंथ पे वो बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है और कौन से टेम्परेचर पे कर रही है, उसको जो भी हम रिलेटेड टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, एनी डाउट हियर? इसका जो रेडिएशन एमिशन होता है दैट इज कंटिन्यूस इन नेचर. ठीक है, अभी हमने बात करी थी, एक तो कंटिन्यूस होगा, एक डिसकंटिन्यूस होगा. अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो डिसकंटिन्यूस होगा, और अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो कंटिन्यूस होगा. तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में दे आर emitting the light which is in a continuous manner. Got it? Let me know. अब आपको पता है कि स्टार्स दे डू एमिट लाइट, यस और नो, है ना. स्टार्स, कुछ स्टार्स आपके एकदम ब्राइट वाइट कलर के होते हैं, कुछ स्टार्स आपके कुछ येलो कलर के दिखाई देते हैं, कुछ आप कई बार देखोगे तो रेडिश भी दिखाई देगा. ओके, तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास जो स्टार है उसका टेम्परेचर कम है, ओके, तब वो रेड के रेंज में कलर शो करेगा. और अगर वो हॉट है, जैसे कि आपका सन, आपको पता है सन इज द हॉटेस्ट स्टार जो हमारे सबसे क्लोज में है, तो वो कैसा हमको शो कर रहा है, येलो या फिर डार्क लाइक एकदम वाइट कलर. यस और नो? सो कौन से रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू सन की अगर हम बात करें येलो, और जो स्टार्स कोल्डर इन नेचर है वो किस तरफ कौन से रेंज में कलर शो करेंगे, रेड के रेंज में. गॉट इट? अभी आपको ये पता है कि कोई स्टार आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है क्या? हैव यू सीन एनी स्टार विच इज ग्रीन इन कलर? नो, है ना. तो उसका रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टार्स ग्रीन कलर एमिट नहीं करते, दे डू एमिट ग्रीन कलर्स, ओके, बट जब हमारे आईज तक वो पहुंचते हैं तो बहुत सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, रेड भी मिक्स हो जाता है, ब्लू भी मिक्स हो जाता है. तो ऑल टुगेदर जब सारे कलर्स मिक्स होते हैं तो आपको कौन सा कलर मिलता है, वाइट. So our eyes जो हैं they combine all these colors and we see white in this case. अगर आपके पास स्टार और हॉटर है, ओके, तो सारे के सारे रेडिएशंस वो एमिट करेगा, वो कौन से रेंज में होगा, ब्लू रेंज में होगा, और हम उसको देख नहीं पाएंगे. अगर बहुत ही ज़्यादा हॉट है तो वो जो रेडिएशन आएगा वो अल्ट्रावायलेट या फिर एक्सरे या फिर गामा के उसमें लाई करेगा. गॉट इट? सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये नहीं समझना है कि कोई ब्लैक बॉडी है वो लाइट एमिट कर रही है ना. उसके नाम से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है. चलो लेट्स सी दिस वन वीडियो. You've certainly seen infrared goggles before, and maybe you've seen this scene in Predator, where Arnold covers himself in mud to mask his body heat and the light it gives off. But why is Arnold's body normally glistening in the infrared? What causes this phenomenon? Whenever we discuss some phenomenon, we almost always wind up somewhere in the quantum world. Because if you ask why enough times, eventually that's where you'll wind up. So it should come as no surprise that there's a bit of a quantum element to describe black body radiation. But luckily, we won't need to stick around here for too long. The first thing to tackle is to figure out what exactly is heat.
I'm sure you've heard that heat is the kinetic energy of molecules or atoms within matter, and that's 80% of the story. But if we want to be a little more precise, we can say that heat is the excess energy that a molecule or atom contains above its ground state. This can be represented visually as changes in rotation, location, and vibration. These are all manifestations of excess energy. When we supply heat to something, we are simply forcing the molecules to undergo one of these changes. Friction is the interaction of the electrons between two surfaces repelling each other and thus moving them about. This movement creates momentum or changes in kinetic energy and subsequently heat. Now we have to enter the quantum world. The electron and the electromagnetic field have a very intimate relationship. Because the electromagnetic field is a manifestation of charges and the electron has a charge or its own magnetic field, changes in one directly influence the other. They're very much like a boat in water. The boat can't go anywhere without creating waves or ripples, and the more aggressive the boat moves, the larger the waves. Similarly, the boat can be influenced by waves as well. Therefore, whenever an electron changes its own magnetic field, be that by changing its momentum or wave function, it sends ripples or photons through the electromagnetic field. That is to say, a change in energy of an electron will always produce a photon. As we leave the quantum world, we keep this little factoid in mind. Changes in electron energy produce light. Blackbody radiation is ultimately the phenomenon we want to discuss today. And having learned that changes in electron energy levels produce light, we could hypothesize that maybe really hot objects glow because the electrons inside are changing their energy a lot. Let's see how that would work. If we visualize a simple model of an atom, we can see an electron whizzing about the nucleus. It exists in an orbital, and that orbital describes a wave function or energy state of our electron. As long as the electron is in that orbital, it has the same amount of energy. As one would imagine, it can certainly increase its energy by transferring into a new orbital, but not easily. An orbital describes a wave function, and waves are dictated by their boundaries. If we imagine a guitar string in a box and we wanted to change its wave function, we'd find unless the wave's nodes appear at the edges of the box, it will collapse. Therefore, only a handful of waves fit in this box. Our electron orbitals are the same. Only certain wave functions will fit around the atom, and each orbital and subsequent wave function possess a unique energy level. So our bounded electron can only change its energy in quantized amounts, and these changes in energy stimulate the creation of photons or light. But how does heat play into this? An opera singer singing at the right pitch can cause a wine glass to break. Molecules naturally vibrate with thermal energy. Like the breaking glass, if a molecule vibrates with the right frequency, those vibrations can stimulate the excitation of an electron into a higher orbital. When this electron returns back to its ground state, it produces light. A vibrating molecule doesn't always vibrate with the right frequency to excite one of its electrons. But a vibrating molecule can vibrate against their neighbor and transfer some of their internal energy to them. This new excess of energy that was transferred can create faster vibrations, which in turn can then excite an electron. As we increase the temperature, more and more vibrations cause more and more excitation of electrons. Stronger vibrations also cause electrons to jump into even higher orbitals. Since electrons in higher orbitals possess even greater energy, when they return to their ground state, they emit even more energy. If we can excite an electron into a high enough orbital, at some point the light energy it gives off when it returns to its ground state will be in the visible spectrum. In matter, orbitals of nearby molecules and atoms overlap and create even more orbitals, or nooks and crannies electrons can occupy. So even though each orbital requires a specific amount of energy, there are so many of them that electrons can release a large variety of light as they transition around. So many that the light appears white to us if an object gets hot enough. That's the basic mechanism for most blackbody radiation in the visual spectrum. But there are a few more sources. Since the electromagnetic field is just that, a field,
It has an orientation on where it wants things to be pointed, exactly like a magnet. In most places in the universe, the forces of the electromagnetic field are incredibly weak, but they exist. A lot of molecules are what we call polar. That means there exist charges at all times within its geometry. We'll visualize water for this. Water has very distinct positive and negatively charged poles. This means it's kind of like a magnet and has a magnetic field that looks like this. If the universe had its way, it would prefer for this field to align with its own. So there is a force that wants the water molecule to align a certain way. In order for the water molecule to rotate, it needs to act against that force. It needs external energy. So if we give it energy in the form of heat, it may rotate. And this rotation causes a change in the electromagnetic field. And thus, a photon is created to mediate that change. But since these forces are so weak, the energy of the photon is very insignificant as well. Therefore, anytime a polar molecule even ever so slightly changes its orientation in space, it produces a photon. But these photons are extremely unimpressive, and as far as we're concerned, contribute very little to what we observe as blackbody radiation. The other main source of light in blackbody radiation is from free electrons. When things get incredibly and stupidly hot, like in plasma, electrons realize there's really no reason for them to be sticking around this hot mess and detach completely from their respective molecules. When an electron isn't bound to an atom or molecule, they're called free electrons. Free electrons can carry as much or as little energy as they want. When bound to an atom, they could only absorb specific quanta of energy. As a free electron, they can absorb whatever they want. Free electrons fly about bumping into each other and ions. These collisions greatly reduce their kinetic energy, or changes their influence on the electromagnetic field. This produces Bremsstrahlung, which is German for braking radiation. This isn't that common on Earth because most of our electrons have a home, but some of the light from lightning is due to this process. Lastly, we should be asking, why is it called blackbody radiation? This is simply a name assigned to a theoretical material that could absorb every single wavelength. In reality, all materials either reflect or let some wavelengths pass directly through them. And since we associate the color black with the absorption of visible light, we call a material that could theoretically absorb all light black as well. So when we measure the radiation from an object, some of it is reflected and transmitted. But black body radiation is the radiation that comes specifically from the object itself. Therefore, when we heat an object up, more and more of that observed radiation comes from the object itself. And that is black body radiation. Okay, so I hope everyone got a little idea about black body radiation. Let me know. सबको समझ में आया थोड़ा बहुत? Okay, so let's coming back to our topic, which is your Planck's quantum theory. So what Planck did? Planck studied the radiations emitted from black body and gave the following observation. First, radiations emitted from any black body are not continuous but are discontinuous.
So when Planck studied about this radiations emitted by the black body, he found that all these radiations are not continuous, they are rather discontinuous. Second, what he observed, any black body emit or absorb energy in the form of small packets or bundles of energy called as quantum. You have heard this word in the video, called as quantum, or sometimes they call it quanta also. बट अगर हम लाइट की बात करें तो इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को वी कॉल एज फोटॉन्स. In the case of light, these are known as photons. Okay, so what are photons? If someone asks you what are photons, it is basically the packet of energy. ओके अभी यू कैंट विजुअलाइज इट इन योर हेड कि ऐसे गोल करेगा, गोल कुछ होगा सर्कुलर फॉर्म में, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फोटोन. ऐसे इस तरीके से इमेजिन नहीं करना है. देयर इज सम कलेक्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज योर photons. Third point which he observed, energy of any photon is proportional to its frequency. Okay, जो भी एनर्जी होगा वो उससे किससे प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से. दैट मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करते हैं. सो ई इज इक्वल टू एच न्यू, एंड दिस कांस्टेंट एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, that is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joules second. ओके, नाउ हम इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं. हमको पता है C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज C बाई लैम्डा. इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम दिस chapter. Okay, lot of numericals will come from this topic. Okay, fourth point which he observed was energy emitted or absorbed, कुछ भी हो सकता है, emission भी हो सकता है और absorption भी हो सकता है, by any object is whole number multiple of एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. अच्छा, जब हम बोल रहे हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आधा पैकेट, 1.5 पैकेट, 2.5 पैकेट, नहीं. इट विल ऑलवेज बी इन अ होल नंबर. ओके, तो आप एनर्जी को हम लिख रहे हैं एच सी बाई लैम्डा, तो हम इसको लिख सकते हैं एन एच सी बाई लैम्डा. और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 टू इन्फिनिटी, बट ये हाफ, आधा, पौना, ये सब नहीं होगा. ओके, इट हैज़ टू ऑलवेज बी अ होल नंबर. सो आई कैन राइट डाउन हियर इसको E इज इक्वल टू एन, sorry h new होगा ये, here it will be n h c by lambda. So अगर मुझे एनर्जी निकालनी है ऑफ वन फोटोन, ठीक है, सिर्फ एक फोटोन की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, so that is going to be E is equal to h nu because n की वैल्यू 1 हो गई, that is h c by lambda. ओके, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है n फोटॉन्स की, then E will be nh nu या फिर nhc by lambda.
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो इसी फॉर्मूला पे. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ photon having wavelength 3000 angstrom. सॉल्व करो ये क्वेश्चन. Solve these three questions. डन. चलो थोड़ा सा हेल्प करती हूँ मैं आपकी सॉल्व करने में. फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन जिसका वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम. सिंपली आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा. फोटोन की बात हो रही है, कुछ अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा 1 लेके चलो. ओके तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 joules second. Speed of light 3.3 into 10 raised to the power 8 meter per second divided by lambda. Lambda is your 3000. इसको मीटर में चेंज करो इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर. ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे तो बताओ आंसर कितना आ रहा है. लेट मी नो. सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 6.63 इंटू, बिकॉज ये तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
10⁻⁻19 जाउल्स। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, ये सेकंड इधर से कैंसिल हो गया, सिर्फ जाउल्स बचेगा। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, इट्स वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू। अब आप पुट करो 6.63 इंटू 10⁻34 जाउल्स सेकेंड, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13.26 इंटू 10⁻34 माइनस 15 हो जाएगा -19 जाउल्स। ओके, अभी देखो, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में जो वैल्यू गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो आपको ये कन्वर्जेंस आनी चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। ओके, या फिर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जाउल्स पर मोल। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करो तो यू विल गेट द आंसर एज 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा, अब ध्यान रखना है कि ये सब बार बार कैलकुलेट करोगे तो ये तो फिर भी इजी था, है ना, बट दिस माइट गेट टीडियस वाइल कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक चीज़ आई वांट टू टेल यू, टू फाइंड आउट द एनर्जी, दैट इज योर E इज इक्वल टू n का वैल्यू इज 1, सो 2400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, बट ये जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये अगर फॉर्मूला यूज़ करोगे, दिस इज योर शॉर्टकट कैलकुलेशन, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा जो होता है, तो एच और सी को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके, और लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो इससे आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बस ये ध्यान रखना है कि वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, अगर जाउल्स गिवन है तो जाउल्स में कन्वर्ट कर देना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है इसको। दिस इज द शॉर्टकट। अभी मैं शॉर्टकट यूज करके बताती हूँ। अब इसमें तो फ्रीक्वेंसी था, खैर, तो फ्रीक्वेंसी में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ दिस मच। तो आपको क्या करना है, एनर्जी इज इक्वल टू 4, सॉरी ये 124, आई एम सो सॉरी, it is your 12400, so 12400 divided by lambda in angstrom, और जो एनर्जी आएगा वो ईवी में आएगा। अब आप इसको लगा दो, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है, 4100। ये कैंसिल आउट हो गया, एंगस्ट्रॉम में ही है, एनर्जी ईवी में रहेगा, इसको आप कैलकुलेट करना इजी हो गया, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपली, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, कैलकुलेशन ईजी हो गया। अदरवाइज आप क्या करते, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, फिर एच को लेते, सी को लेते, फिर लैम्डा को उससे डिवाइड करते, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट शॉर्टकट वाला यूज करोगे तो ये आ जाएगा। बट जो एनर्जी आई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और सपोज ऑप्शन में जो है वो किलो जाउल्स में गिवन है, तो आपको पता है 1 EV इज इक्वल टू 96 किलो जाउल्स पर मोल, सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96 किलो जाउल्स पर मोल, which is your 288 kilojoules per mole. समझ आया? Is it clear to everyone or not? Let me know. Got it or not? Let me know. Everyone. हाँ, तो 1 मोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एन
जो भी आपको वैल्यू निकालनी है तो पर मोल ही तो निकाला है हमने। ये जो वैल्यू आया ये कितना है, 96 किलो जूल्स पर मोल ही तो है, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ईवी को हमने कन्वर्ट कर दिया किलो जूल्स पर मोल में। चलो एक और क्वेश्चन करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ photons having wavelength 3100 nanometer which are required to obtain energy of 2 into 10 raised to the power 5 joules। अब देखो ये ध्यान रखना, एनर्जी यहाँ जाउल्स में दिया, शॉर्टकट अगर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो लॉन्ग कट कैसे यूज करना है मैं बता देती हूँ। E इज इक्वल टू एन एच सी वाई लैम्डा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब वो n की वैल्यू पूछ रहा है। E गिवन है, h कांस्टेंट है, c आपको पता है, लैम्डा गिवन है, आप n निकाल लो, ठीक है। सारा कैलकुलेशन करने पे मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, E इज इक्वल टू n इंटू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, बट ये एनर्जी जो है मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर इसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जाउल्स में, तो मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वैल्यू से, तो मेरा जो पूरा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट हो गया जाउल्स में। अब हो जाएगा n इंटू 12400 डिवाइडेड बाई 3100। अब नैनोमीटर में है तो मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर में, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ध्यान रखना है कि किस में कन्वर्ट कर रहे हो, नैनोमीटर में और मीटर में, ओके। सो दिस विल बी योर, अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ेगा एनर्जी किस में है, ठीक है। कन्वर्ट कर लो इसको उसमें, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो उसके लिए आपको पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ एंगस्ट्रॉम में है, ओके, और यहाँ नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो क्या मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहिए? वेवलेंथ तो यहाँ पे कहा किस फॉर्म में गिवन है, इट इज गिवन इन दी एंगस्ट्रॉम ओनली। यहाँ नैनोमीटर है तो मुझे एक्चुअली नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, तो उसके लिए नैनोमीटर को आप 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा वेवलेंथ। गॉट इट? मीटर में करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रॉम में ही रखना। सो इसको मैं जो भी नैनोमीटर में आ रहा है इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस इज नाउ माई एंगस्ट्रॉम। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो मुझे जाउल्स में करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको 10⁻⁻19 जाउल्स से। एनर्जी क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2 × 10⁵ जाउल्स। जाउल्स जाउल्स कैंसिल आउट हो गया, ओके। ये 0 0 कैंसिल कर दो, ओके। 31 4 आई थिंक 124 मिल जाएगा आपको। देखो कैलकुलेट करके 31 4 दैट ओनली ना, वो ध्यान रखेंगे आपको वैल्यू ही ऐसा देंगे जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। वो आपका कैलकुलेशन इतना चेक नहीं करना चाहते, ओके। सो दिस इज 31 4 ओके, दिस इज 2 2 और यहाँ पे 10⁵ है, इसको उधर लेके जाओ 10 को, तो 10⁶ हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में है मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 3.12 इंटू 10⁻23, ठीक है। क्लियर है? आप चाहो तो आप लॉन्गर मेथड लगा लो। इफ यू आर फाइंडिंग दिस इजी, दैट इज टोटली अप टू यू। अगर एग्जाम में शॉर्टकट से नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो छोड़ देना, लॉन्गर मेथड से कर लेना। चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ।
हाँ, संपदा n इज होल नंबर होना चाहिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारा वैल्यू यही आ रहा है, हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे ना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है. This is your one question for homework. Then next is calculate number of photons emitted per second having wavelength 2000 angstrom by a bulb of 60 watt. ये थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए वोल्टेज दिया है. ट्राई टू डू दिस. एक और क्वेश्चन लिख लो. Calculate number of photons emitted by a bulb of 100 watt having efficiency of 80% in 10 minutes, and wavelength of photon is 310 nanometer. Okay, all these three questions are for your homework. I will discuss these questions in next class.